आज अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इम्पोर्टेंट वो सीखने वाले हैं। मैं स्क्रीन शेयर Okay. करता हूँ आपके साथ में। ओके, सो आपको मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो हुआ सर? जो इमेजेस मैंने आपको बोले थे अलग अलग जो क्लिक करने हैं अलग तो अलग मूड के साथ। आपको ईमेल भेजा ना, कुछ अच्छा, किया, ओके ओके थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर भी किया, ओके। आपको ईमेल में भेजा है। जी जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, करो। एक्चुअली आज मुंबई में बहुत बारिश है ना, मॉर्निंग से लेकर अब हाँ तक हाँ, continuously बारिश है। तो ये मेल आईडी है सर अपने, क्या नाम बोलता हूँ सर? कृष्णा दिस वीडियो एडिटिंग नो। यस, वो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स है ना जहाँ से कंटिन्यूअसली हाँ, जॉब्स आते रहते हैं फ्रीलांसिंग असाइनमेंट से। अभी कैनन का ओके, और एक मास्टर क्लास कंटिन्यूअसली अभी चल रहा है। कैनन जो कंपनी है ना, so Canon हाँ, always provides a master class where the different people from different industry they comes, they share फॉर the फोटोग्राफर्स। for photographers only. So सर आपने जो ईमेल मुझे मेल भेजा था, आई थिंक कौन सा आपका? सतीश डॉट ग्रीनेज। सतीश, Maybe you have to look at the spam. ओके ओके, Maybe, I don't know. श्योर, नो प्रॉब्लम। Long time back, 4 o'clock, 4:15, like that, I think. ओके ओके, सतीश सर्च करो ना। सतीश, हाँ, वो सर्च करो, देखो, और एक बार भेजने का है तो। वो जो सेकंड आईडी मैंने भेजा है ना सर, Krishna@great production। कृष्णा at same, whatever you gave me, same thing. ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Krishna at gr8production.com. राइट, ये मेरा कंपनी का मेल आईडी है। ओके, तो ओके, अभी ठीक जो है। दो भेजे थे मैंने, एक पर्सनल आईडी भेजा था, एक कंपनी का भेजा। कृष्णा पाटिल 750, वो तो मैं देखा भी नहीं है, ठीक है, लास्ट में क्या है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। सो राइट, आई गॉट योर मेल। आई लाइक दैट। मैं कुछ किया बट ठीक है मेरे सर, कोई को। बात नहीं। आपने जो किया वो प्रैक्टिस वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी ये इमेज में देखता हूँ। देन आई विल टेल यू व्हाट हाउ आई हैव डन। श्योर श्योर, या नाउ दिस इमेज, यहाँ पर फोकस जो है हमारा, फोकस डीप फोकस हो गया है। जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर ओके, लिखा ठीक हुआ था। है। मैं तो क्या किया, हम्म, पहले ग्रीन में रखा, वो लेफ्ट साइड ना, ये वाला। राइट, ऑटो मोड जो शो कर रहा है ग्रीन में हाँ, वो A+। उसमें रख के थ्री फीट से शूट किया। ओके ओके, 55 में है जूम, कुछ चेंज नहीं किया मैं। ओके, और कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ ऑटो में रख के राइट। किया। अभी जो आपका लेंस है, लेंस पे देखिए हमने वो एक बटन देखा था A और M का, ऑटो फोकस और मैनुअल का। वो हाँ, जो बटन है वो M पर है या A पे है? अभी लेंस पर एम पे है। M पे है। इसकी वजह से आपका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट मैनुअल फोकस पे आया तो वो ब्लर दिखाई दे रहा है। वही से अगर आप A पे करोगे ना, तो जब आप क्लिक करोगे तब कैमरा इस ताजमहल के ऊपर फोकस करेगा और वो आप इमेज क्लिक करोगे तो क्लियर आएगा। ठीक है, अभी ठीक है, यहाँ वो पर तो मैं नहीं देखा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। यही तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, कि आप जो प्रैक्टिस करोगे ना, उस प्रैक्टिस किए हुए इमेजेस को हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे अभी जब मैं शूट कर रहा था क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों मैं ठीक है। इस तरीके से इमेजेस क्लिक कर पाया। तो ये आप जब क्लिक कर रहे हो ना, ये प्रॉपर है, इसमें कोई ऐसा मतलब रॉन्ग चीज कोई नहीं है। सिर्फ इतना हमें ध्यान में रखना है कि जब मैं कोई इमेज क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा फोकस जो है वो लेंस में जो बटन आपको बताया था ना मैंने, वो लेंस में जो बटन है उस पर भी मुझे ध्यान देना है, ताकि ओके, जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो कैमरा है वो फोकस उस पर्टिकुलर बॉटल पे करेगा या फिर पर्टिकुलर ताजमहल पे करेगा। फिर मैं जो इमेज लूंगा वो शार्प दिखाई देगा।
ठीक है, ठीक ठीक है। है, तो सेम असाइनमेंट आपका आज भी आपको एक बार दोबारा करना है। अभी आप जब ऑटो फोकस का जो बटन है उसको स्विच कर दीजिएगा, एम पर जो कर है ना दिया। वो ए पर कर दीजिए, सेम ठीक शॉट है, लीजिएगा 3 फीट के डिस्टेंस से, ठीक है। ठीक है। ओके, तो आज का जो हमारा Then I kept next image is I switch the button one हम्म, by one step, go राइट, on clicking. एग्जैक्टली, Okay. तो वो Simply. For राइट, today, what I will do is I will understand what that button is. I will श्योर, try to match it up. डेफिनेटली Then in the डेफिनेटली, last image you see, it is a normal shot. No, go down. You may have one more picture. 9 not. ओके, 2 3 वो बहुत 5 मोटा 6, होगा, नहीं आया होगा ओके वो। 6 इमेजेस ओके, मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, टुडे I know now. Slowly I'll do. Okay, initially in the morning, the data transfer was not happening. The cable was wrong. By the time I found the cable, okay, it was too, because I have heaped up all the cable together. So राइट, many cables are there. राइट, Then by the time I found and tried to transfer it, it took some time. Then I had today three, kind of thing. One was on some COVID. Our apartment complex was conducting a session. I attended that. Then Yoga Nidra was there from 10 to 12. राइट, Yoga Nidra. That is why we postponed to evening. ओके, Then lunch. Then I take a English class for a girl here. That took today too much of time. 2 o'clock, 2 hours. Like that, my whole time had gone. Tomorrow I will do. sure sir, sure, take your time, tomorrow you have a time, just try to practice tomorrow, then we will No, again. actually, I don't have time. Exactly, I can understand sir. I want to be occupied. I don't want to have time. So this also very good for me. You can tell me any assignment, slowly only I will do, Sure, sure, but I can do. No problem at all. Okay, sure I sir. understand everything, what you say. No Right, problem on that. Only application of mind. I can do more complex thing also. But sure. today my application of mind was not perfect. And tomorrow in Karnataka we have 100% band also, Oh, because of this COVID. So from today 6 o'clock or 8 o'clock till Monday morning, it's all completely closed down. okay, So it's half an hour controlled. I was telling the cook how to prepare food and all for me. That Right, itself took, because she doesn't live here and she cannot move tomorrow come here. So right, she has to prepare at home and send it to me. All that exactly. planning was going. Right, sir. I also heard that in the news that in Bangalore or in Karnataka and in Mumbai also there are some that is districts are there in Mumbai, so they have completed lockdown for next 2 days. So because of the cases are increasing tremendously. Mumbai we cannot count now today. They Exactly. have crossed all the limits. The situation over here is too much complicated as of now, and too much worse also we Yes. can say. And too So dangerous too. Whole country it is dangerous. definitely, so because one of my that is we can say there was another person from my production house, so he lost her mom just due to this COVID in the last week. Ayyo. So we were not that is having a sense that what should say right now, because it was happened like in the morning she was fine, in afternoon she was admitted in the hospital, and after admission of at hospital within 2 to 3 hours she died. So it was like a very bad news for us. So I told him to take the entire this family and everything and all. So what will be happening, that will look, and we can't do anything. So that's the reason we like are like we are scared to go out. If I want to go also outside also, we are having that intention in mind, or somewhere it will be, or it can be happen to me Yeah, also. dangerous only. Bombay, Dangerous, crowded place. crowded place here. Okay, And so even the houses are crowded, I think. too much. The density Uh, of people over here is a lot. yeah, only some big apartments are okay. Right. Otherwise, all, yeah, I know that. In It's very Karnataka, dangerous.
also I came once, sir. There is a Kundapura village is there in Karnataka. Kundapura. Kundapura. So I came over there. There is a Kundapura college is there. So I did entire corporate film shoot over there for that particular school. So the last year it was 3 digit project of mine. So I with my team I came over here. I will be having that photos, that videos also with me. I will show you at the end of this lecture. Okay. So now we will start our lecture. The last lecture we understood the aperture. Aperture. Exactly, sir. So now we will be having the another major topic, which is called as a shutter speed. So this is called as shutter speed. So what exactly shutter speed means? So it is like a window. Say suppose now in my home I have a window. Okay. So whenever I open a window, so light comes into our house. When I close the window, automatically that light will get cut down. So the speed of closing and opening of that window, it is called as a shutter speed. So in camera also there is a one window which allows to light to enter into the camera like a aperture. Aperture is in the lens. Okay, aperture element is in the lens, but there is another element in camera body which is called as a shutter. So what shutter exactly do? It allows a light to hit to the sensor and it cuts the light while hitting to the sensor. So that amount of light I can control using the shutter speed. So we will go with one short video which will help us to understand that how the shutter mechanism exactly looks and how it operates. Okay? Okay. Sure, sir. Just we will now. So okay, yeah. There was one lecture which I was editing yesterday's lecture. So every day I have to provide the. Today also I have provided the recording link to you, sir. You have you received? No, I have received, but I didn't see. Tomorrow I will see. Sure, no problem, sir. Okay, so now they have So this is the video which will help us to understand exactly how it operates. How the shutter. Hi guys, in this film I will show you how the shutter works and how it is powered. Shutter consists of two curtains. To make a photo, one curtain has to open and after the required time, the second curtain has to close. Curtains have to be pulling on and after release they are driven by a spring. So like when you open the lens of your camera, so you can see there is a one mirror, like downward mirror is there. So when we press the shutter button, that is our camera click button, so what happens, that mirror goes up and now the light is hitting to the sensor. So here that entire mechanism, it is already installed in the camera, and when the light we want to enter, so now here shutter gets open. Shutter means these curtains of black color. So these are two curtains which are installed in that entire mechanism, that is a window which gets flipped like this. So say suppose when it is closed, so when it will open, so light is coming in and hitting to the sensor. When it will get closed, so light will get cut down. And the black color, I always told you that the black color always absorbs the color. It cuts down the light. So that is the black color has been used to make this shutter. Okay. So just we will go ahead with the video. Curtains can be blocked in their dedicated position and they are released independently by small electromagnets.
So you can see over here, when he is pressing that button, so that curtain is getting closed and curtain is getting open. So when the curtain will get open, the light will automatically come. When curtain will get closed, light will get cut down. So now he will enter a power, he will give a power to that mechanism, and then we can see the speed of that closing and opening of that curtain. To trigger and close the upper curtain, which is blocked in open position, we need to power the first coil of electromagnet. I have put here a voltage of 3 volts. To open it back, we need to pull it on. To block the down curtain, we need to pull it on and power the second coil. It blocks the down curtain in close position, and after release the voltage, the curtain is open. Here you can see it in slow motion. The opening time is about 1/215 seconds. So now the video which he has captured, he is slowing the speed of that video because the shutter speed is 1/125. So we will go ahead and we will see that what exactly means that 1/25. But as of now, we just need to understand that it gets fastly closed and fastly open. So the speed of opening and closing is too much high. That's the reason he's slowing the video with the 25%. Here you can see he's slowing down the speed of that video is 25%. And now we are able to see that how it is getting open and it is getting closed. Now we are close the second curtain. For automatically pull the curtains, there is a motor with a worm gear. I powered it with 3 volts. If the upper curtain will be closed, the motor pulls on both curtains in the same time. Inside the shutter, there are also some sensors which detect the current position of the motor for proper open the curtains. Here you can see a powered motor in slow motion. If the shutter in your camera suddenly stopped working, it is large probability that, for example, a sand grain fell into your camera and have blocked the gear. Okay, so here we came to know that there is a one mechanism which is installed in the camera and which allows you to enter or to close the shutter. So there is another video which will help us to understand that in camera how it works, like what is the shutter speed. Anyone can pursue their dream and carve out the life that they want. Meet Mimi. What is shutter speed? While it may seem like the answer is obvious, there's more to shutter speed than meets the eye. Let's take a closer look. Shutter speed is one of the 3 pillars of photography, the other 2 being ISO and aperture. Also known as exposure time, shutter speed is defined as the length of time the image sensor in a camera is exposed to incoming light. Before we go more in depth, however, let's take a look at the different parts of the camera that contribute to taking a photo. In a standard DSLR, when you press the shutter button, a mirror flips up, allowing light to pass into the camera instead of the viewfinder. Once the mirror is flipped upwards, a small door will move from top to bottom, exposing the sensor beneath. After that, another door will fall down, covering up the entire sensor. After the second door closes, your mirror will fall back into place. The doors will then reset to their original positions underneath. The longer the shutter is kept open, the more light will enter the camera. In auto mode, cameras will meter the scene and determine an adequate shutter speed to keep the picture from becoming either over or underexposed.
You can manually change the shutter speed by either putting the camera in shutter priority mode, which will let you change shutter speed, letting the camera calculate ISO and aperture, or full manual mode, which gives you full control over all your camera settings. Shutter speeds are measured in fractions of a second when under 1 second. For example, 1/4 displayed on the camera means the shutter speed is 1/4 a second, whereas 1/250 means the shutter speed is 1/250th of a second. Most cameras can handle shutter speeds as fast as 1/4000th of a second, or sometimes even as high as 1/8000th of a second, and shutter speeds as long as 30 seconds. Longer shutter speeds can be achieved using a function known as bulb mode, where the shutter speed is determined by the length of time the shutter button is activated, either manually or through a remote trigger. It's good to know what effects different shutter speeds have, as it can affect the type of picture produced. Short shutter speeds, often quicker than 1/1000th of a second, are fast enough to capture the fast movement of wildlife and sports, and freeze water droplets and small particles. For everyday photography, shutter speeds around 1/100th of a second are fast enough to keep subjects from blurring. If you're shooting handheld, longer shutter speeds may also cause your shaky hands to blur the photo. Newer lenses from most manufacturers have attempted to solve this problem by introducing vibration reduction technology into lenses to correct for minor shakes. Night photography will often utilize longer shutter speeds to capture as much light as possible. Shutter speeds as long as 20 or 30 seconds may even be used to take pictures of the Milky Way. Knowing the principles of shutter speed will allow you to make better decisions about how you want your picture to look, whether you're freezing the action, creating a time warp effect, letting in little light, or as much as you can. Though it's a very basic concept of photography, it is no less important in making a fantastic photo. Stay subscribed to Apple Apps for more So in video, we have understood the little much more information about the shutter speed, but we will understand slowly that using the charts and all. So here we only came to know that there is a one element that is one pillar of the photography, right? We understood the aperture. Now we are at shutter speed. Okay. So shutter, as we know that it is one curtain which is attached to the sensor and it allows to enter the light. Then okay, in this image. So now when that curtain is opening, so what happens? There is a direct light source is the sun. Okay, direct light source is there. The light is getting that hit to the tree. Then there is a reflective light. Reflective light is getting entered into the camera. So now this, we can say there is a one red color ring. So this is your aperture. So this red line refers to your aperture. So which cutting down light, and there is this white color light. So which is called as your mirror. So if you detach your lens also in your camera, you will be able to see one mirror. So when you will put that mirror, automatically it will go upside. That is, it will get flipped, and then the light will get attached to the sensor. So this is the only mechanism. Then what is the use of shutter and how it is getting measured? So there is one chart for understanding better that how the shutter speed getting calculated. Like aperture, when we saw that aperture is always calculated in f-stop, that we saw f number indicates that how much opening of my lens is there. Like in a shutter speed, it is getting measured in the unit of a second. So exactly it means, like say suppose there is a 1 second time is there, right? Okay. So shutter speed is the length of a time in a cameras, and the shutter is open to expose the light into the cameras to the sensor. So exact how it is getting calculated, there is a one unit which is called as a 1/3 of the second. So there is a unit which is called as second, we can say as a time of a second. So it is, what is exactly means, slower the shutter speed, that is 1/25 means the time of 1 second, if I divide it into the 25 different equal parts. So the timing which is 1 second, if I divide it into 25 different equal parts, the time which will be the nanosecond, one part of that 25
which will be the something nanosecond. So that time, within that time, the shutter will get open and shutter will get closed. Like if I want to calculate, so say suppose here, calculator. What you want to count? 0.004. Exactly, it's 0.004 if it is 125, or say suppose if it is 8,000, 1 by 8,000, which we use in the sport photography. So that time, Yeah. every small nanosecond is there. So that nanosecond will allow the shutter increase and shutter close. That is the speed of that shutter, that motor speed. So we can say like a motor speed always calculated in RPM, that one round per minute. In shutter speed, we calculate as a 1 by, means 1 is the second, and divided by the number of parts I'm dividing that 1 second. So there is a chart which is called as a shutter speed chart, like okay, here. Yeah. So shutter speed always indicate in a 1 by something. So which is the 1 second divided by how much is your shutter speed. So if it is a slower, that is 1 by 25, means more light it will get entered into the camera. तो जितना मेरा शटर स्पीड कम रहेगा उतना मेरा कैमरा में लाइट ज्यादा आएगा, मेरे सेंसर को ज्यादा हिट करेगा. Faster the shutter speed, it will allow that shutter fastly open up and closing up. So it will result in less light entering into your camera. तो उसका भी exactly result कैसे होता है, जैसे ये एक image हम लोग देख सकते हैं. So this is the example of shutter speed and light. So now the shutter speed is 1 by 125. So it means 1 second has been divided in 125 equal parts, and the one part is the time when the shutter will open and it will get closed. So you can see the light in my image is too much less. That means my image is a darker, which is in photography language we say as a underexposed image. So underexposed means what? If my light which should be there in the image, if it is less than that, so it is called as a underexposed image, means a darker image. If it is a much more than that which is required, so it is called as a overexposed image, like this one, which is entirely white image. So here we can see, as I am increasing my shutter speed, so from 1 by 125 I came into the 1 by 100, then again 1 by 80, 1 by 60, 1 by 40, 1 by 50, 1 by 30, 1 by 120, 1 by 25. So light is getting high in my camera, and that's the reason my image is getting much more light. So this entire series of images, I can choose this one is my perfect image. Like I'm shooting in the daylight, so what I will do, I will capture all these images. Okay, if I want to practice, I don't have any idea that which shutter speed should be ideal for this particular situation. So I will try in multiple shutter speed, multiple shots. Then after that, I will select this is a perfect shot, because this is again a underexposed, means there is a darkness which I don't want in my image. So here I will select this one. If I go again less than that shutter speed, so I can see the light is totally damaging my image. So my image is getting too much white light. Okay, so it is an inverse relationship. Lower the shutter speed means the less light is coming into your camera. Higher the shutter speed means the less light, lower the shutter speed means the much light is getting into your camera, and higher the shutter speed means less light getting into your camera. Okay, correct. So like here we can see, but there is a one more thing, sir, that say suppose if I'm shooting with my handheld camera, like I don't have a tripod, in that case if I'm going below 1 by 80, so there are chances my camera will get shake, because human hand is like always shaking. So when I'm using shutter speed lower than 1 by 100 or 1 by 80, so I should have one tripod with me where I can place my camera and click. Otherwise, I told you I have to find a surface which is stable. So what I will do, I will find a stable surface, I will put my camera on that surface and I will
switch my shutter speed to the below than 1/100 and I can click. So that's the reason in night photography, you always able to see that the photographers use a tripod, because in night photography, the shutter speed we have to keep very slow. That is below than 1/25. That is a 1 second, 2 second, 3 second. So what is 3 second means? The shutter will get open for 3 seconds and then it will get captured. The image will get captured. So that we will see later on. As of now, just to understand that conclusion, what we have studied over here as of now, the shutter is one element which is installed in the camera, which allows light entering to the sensor. Okay, shutter speed always indicates in the number that it is we can say it is measured in one unit which is called as time. That is 1/, means 1 second is the time, and the by means I'm dividing that 1 second with my camera setting. So 1/125 means 1 second has been divided in 125 equal parts. So the 1 nanosecond will be the time when my shutter will get open and it will get closed. Okay, till now have you understood, sir? Yes. Okay. So now we will go ahead and we will see that same situation if I'm capturing. So what result shutter speed indicates in my entire final image. Like here, when I'm shooting the water which is continuously moving, so my shutter speed, if I'm getting lower, so what will happen? The shutter is opening for longer time, much light came into the image, that is came into the sensor, and then you can see there is a milky effect which is captured in the camera. So when I want such kind of shot, that is a creative shot, so that time I slow my shutter speed, but simultaneously I keep my camera on a tripod or maybe on stable surface, because here you can see in this image there are that milky effect is there. There are some rocks which are stable. That's the reason they captured clearly. The water is moving. That's the reason the water is getting as a milky effect. Like our fan, which I told you, fan has only 3 different elements. That is, हम लोग जिसको कहते हैं कि fan के पत्ते हैं, मतलब पंखे हैं. तो 3 पंखे हैं fan के. But when it continuously scrolling, that continuously fan is running. So when I saw, so that time I look like it's an entire ring. So like that only here, the one drop is there, again second drop. So it is framing one line. So like this, you are getting the milky effect. But here, my shutter speed is too much high. So what I'm doing, my image is getting captured too fastly, and that's the reason I'm able to freeze the moment. So here we see, like this means you are freezing a moment. Here you will get the exact droplet which is getting fallen down from that one rock to another one, and here you are getting a milky effect. So whenever you are shooting a subject which is moving out, like I told you, like a man is walking or athlete is running, or say suppose the car is running away, the flight is not flying. So in that time I have to keep shutter speed too much high because the subject is moving fastly. So I have to freeze that motion. I have to freeze that particular action, and those where I want to create a different kind of creative image. So I can go ahead, I can manipulate my camera setting, and I can get a result like this, which is looks like much better than the right hand side image. Okay. So there is another example of fast shutter speed and how it is getting captured. Like here, this shot is getting captured in the studio. So what is here entire setup is like the camera is placed on a tripod in front of the subject. There is a one man who is holding the balloon which is full of water, and in the top of the head of that particular model, when he just वो balloon को जो फोड़ देते हैं, so that water is getting fallen down on the head of that particular model. So I'm using my shutter speed too much high. That's the reason I'm able to capture this entire droplets and the motion of that particular water. So for these kind of shots, I require too much high shutter speed, like 1/1000th of the second, 1/2000th of a second, depending that how much action, that how much fastly your action is going on. Like here, he's already done wet. He already wet his hairs with the water, and he's just switching.
So again, I am using my fast shutter speed, like in Formula One racing car. So here the shutter speed will be like 1/1000 or 1/4000 of the second. Sometimes we go beyond, and 1/8000 also we have using to capture the motor, like capture this Formula One racing car. So in sport photography, they always use a high shutter speed. In action photography, then again the shutter speed is too much high, just because we have to capture that particular moment, capture that motion. Okay, so now we saw the result, that is examples of the faster shutter speed. Now we will go ahead and we will see the examples of smaller shutter speed. So what is the entire totally difference between the smaller and faster shutter speed? Like here I told you, there is a one light that इसको कहते हैं ना, जो इसको कुछ तो कहते हैं, लाइक इन पेयर में होता है राउंड, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं वगैरह. आई एम नॉट गेटिंग द पर्टिकुलर वर्ड. झूला, जिसको सारे तरीके से लाइट्स लगे होते हैं. तो वहां पर कैसे होता है, जब मैं कोई ऐसे नाइट में फोटोग्राफी कर रहा हूँ, इफ आई एम शूटिंग इन नाइट सिचुएशन, एंड दैट एक्शन इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग, दैट झूला इज कंटिन्यूअसली मूविंग राउंड. So what is I done? I put my camera on a tripod. I click with my slower shutter speed. So what is happening? Because of that continuous movement of that entire jhula, so it is framing one ring of the light. So that's the reason this kind of shot which we are able to capture. Same like here, I told my model to stand on a particular that is place. Okay, and the metro is coming. So what I am doing, I am just slowing my shutter speed, and because of that slow shutter speed, the movement of the metro is getting captured but in a blur way, but my model is still constant. So because of my model is still constant, so you can see the focus is entirely on the model. The model is not getting blurred, only the part of that particular metro has been blurred. So this is again one example of slow shutter speed, where we use to create a creative kind of images. Like here, again on the highway, this image has been taken, and there is a one side from where the vehicles are coming, that is the headlight of the vehicles, and the other side is a tail light of the vehicle. So that's the reason when the vehicle is coming on, due to the slower shutter speed, vehicle is running fast, so that it will not capture the vehicle, it will just capture a light. So the light is getting exposed to the camera for a much longer time, and you will see there is a one line which is framing out. Like here the yellow line is there, and here the red line is there. So this kind of photography we see, that is we called as the light trait. So light trait is the word, we called it as a light trait when I'm capturing on a highways, or say suppose I'm capturing a railway track. When the railway is coming on, so I will be able to see the entire light with the light. So I will show you another 2-3 images which I clicked, and what is the use, that there was the same subject which was clicked with the faster shutter speed and with the slower shutter speed. So what is the difference between the faster and slower shutter speed, that we will see. When I was starting photography, so that time I was supposed to upload my entire images. So these are all images which I clicked when I was like starting and I was practicing. So there is a one subject. Okay. So here the faster shutter speed is there. So this image I took on a highway. Okay. And I was also on a bike, and there is another on a service road. There was one girl who was driving this Avenger motorbike. So what I did, I increased my shutter speed with the 1/250th of the second, and on that continuously both the vehicles, that is his bike and mine bike, are totally continuously moving, and I captured this shot. So you can see the entire focus is on particular bike. Okay, here we can see the bike is moving, that the tires, I can now see that tires are getting moved. So what is the difference between this image, that due to the higher shutter speed, I am able to freeze the motion, though it is in fast mode. So approximately the speed was 70 to 80 km/h. So that is the reason the subject is getting captured,
again there is another image like here. I am on back of the my bike, and you can see there is a bike which is attached to the vehicle, like a cycle which is attached to the car. So again, this is a image which was taken in continuously motion. You can see I was sitting on a bike and I was capturing. So in my that bike light also I was got captured. Like here you can again see here. So this is our Navy helicopter, and due to the faster shutter speed, I'm able to capture these 4 fans of particular helicopter. But when I'm watching with my eyes, so I will be able to see the entire ring of that particular 4 fans. Here we can see, like here the speed of this small fan is much more as compared to this fan. So here we can see there are total 5 blades are there, but when I'm watching, so I will be able to determine that there is a total entire ring which is getting formed. तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि 2 अलग अलग स्पीड होते हैं, तो दोनों फैन का जो स्पीड है डिफरेंस होता है. So because of that, I can able to capture these 4 blades, but here I am not able to capture in a sharper way. It is getting too much fast. Okay. तो ये एक example था. Again, these are all my stock photography. So again, in Mumbai there is a one law that is very much too old. Railway engine is there, which is kept on a side of the track. So I went over there in the morning. I captured all these images. Like okay. Okay. Then again the wildlife started. When I started wildlife, so I was supposed to go into the forest for 5 days, 7 days, 10 days. So that time, on 1 or 2 days, I was supposed to carry my batteries. After that, the batteries got exhaust. So just for 1 or 2 days, I was able to capture, and I got this particular kind of images. So those images, which was too much fine, that uploaded on the stock photography website, and these are images which are non-copyrighted. So that images I put on my Facebook. There was one Jula which was captured in Mumbai. There was one place which is called as a Thane. So there I captured that particular example of shutter speed. These are again monkeys and all. Like here. So this is the we can say, जिसको हम लोग खाड़ी कहते हैं ना, जहाँ पे समुद्र का पानी शहर के अंदर आ जाता है थोड़ा फार. तो दिस इज काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर, हिंदी में उसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, बट हियर यू कैन सी द waves of the water are too much less, just because I slower down the shutter speed, and I'm able to capture this kind of image where I can see the reflection of my sky into the water, and here my subject is getting connected on the top of the image and background and the upper ground, so that image is getting continuously. So this was landscape image which I was capturing, and here that Jhula is there. I am standing that opposite side of the road, and this is one tanga, like Ghoda Gadi. So in Thane there is a Ghoda Gadi which for tourists they run. But when I saw this Rula which was continuously running, so I lowered the shutter speed. I put that on a rock because I was not having a tripod. So I found one stable surface. I put my camera over here and I capture this shot. So here I'm able to see my entire circle is with the light. There is a red light, blue light and green light. And the same shot again I captured with the faster shutter speed. That is this kind of shot. So the subject is the same. My shutter speed, if it is I'm getting lower, so I will be able to capture this kind of shot. Here the again speed of that continuously running, that is उस झूले का जो speed था एक पूरा घूमने का, वो speed same था. So we can see like what is the use of shutter speed, how it getting reflect in your camera, and how the final image will get vary according to your shutter speed. तो एज अ कंक्लूजन अभी जो हम लोगों ने अब तक सीखा कि शटर स्पीड एक एलिमेंट होता है जो मैकेनिज्म मेरे कैमरा के अंदर इंस्टॉल किया गया है. देन उसका फंक्शनिंग, कि उसका फंक्शन क्या है, वो मेरे कैमरा में लाइट एंटर होने के लिए मुझे हेल्प करता है.
then I can control it using one setting which is called as a shutter speed, जो हमेशा मेजर की जाती है 1 by number, that is एक सेकंड को मैं कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. So it can be lower as a bulb, जो बल्ब मोड है अभी हम लोग डिस्कस करना है कि बल्ब मोड क्या होता है. So हम लोग सिर्फ अभी यहाँ पर देखेंगे कि शटर स्पीड हाईएस्ट नंबर कितना होता है 1 by 8000. 8000 is the highest one and the bulb is the lower one. So again to extreme point, शटर स्पीड मेरा सबसे कम अगर मुझे चाहिए तो वो हो जाएगा बल्ब मोड पे, बल्ब मोड. और अगर मुझे हायर चाहिए तो वो हो जाएगा मेरा 1 by 8000. जो बहुत हाईली प्रोफेशनल कैमराज होते हैं उनमें वो सेटिंग होती है. हमारे कैमराज में हम लोग मैक्सिमम 1 by 4000 तक जा सकते हैं जो बिगिनर लेवल कैमराज है. सो अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन कीजिए. ओके, पुट इट ऑन अ एस मोड which we now discuss in a earlier lecture. Take your time to see 1.8. नीचे हाँ, यहाँ पे जो आपका LCD है ना, तो LCD पे आपको, जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इमेज, तो यहाँ पर आपका इमेज में इस तरीके से आपका LCD शो करेगा. तो आपका एक तो यहाँ पर 1 by 125 एक कॉलम में ऐसा नंबर होगा, या फिर यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो आप इस कंडीशन में अगर मैं मैनुअल मोड पे कैनन को निकॉन में मैनुअल मोड पे डालता हूँ तो मुझे सिर्फ नंबर दिखाई देगा. दैट इज मैनुअल मोड में डालना है. नहीं, एस मोड पे रखोगे तो भी कोई इशू नहीं. एस मोड पे आपका शटर आप चेंज कर सकते हो. आप एम मोड पे डालोगे तो भी चलेगा. एम मोड पे आप कैमरा स्विच कर दीजिए. एम मोड जो है उस पे आप कैमरा स्विच कर दीजिए. ओके, अभी राइट, अभी आपको वहां पर एक लाइन दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ नंबर लिखा होगा. वो नंबर मुझे बताइए. कुछ नहीं दिखा रहा है उधर नंबर. एलसीडी आपका ऑन है, राइट? हाँ. ओके, अभी आप वहां पे जो स्क्रोलिंग डायल है ना आपके कैमरा के बैक साइड में, स्क्रोलिंग डायल को थोड़ा घुमाइए तो आपका नंबर वो चेंज होगा. या फिर सामने का जो आपका डायल है ना जहां पर रेड कलर का लाइन है फ्रंट साइड ऑफ द कैमरा, जो फ्रंट साइड का कैमरा पे एक स्क्रोल डायल आपको मैंने बताया था, यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो ये वाला. इसको आप जब घुमाओगे ना तो आपका वो नंबर चेंज होगा. अभी नंबर कुछ अलग दिखा रहा होगा, जैसे आप चेंज करोगे तो नंबर चेंज होते जाएगा आपका. कुछ नहीं चेंज हो रहा. ये एस में है, ये वाला एस में है. एस पे है ना आपका वो बोर्ड, शटर स्पीड में है. तो जब आप अभी तक कैमरा जब मोड ऑन करोगे ना तो आपका सिर्फ शटर स्पीड चेंज होगा. वो जो स्क्रोलिंग बटन है ना, वो स्क्रोलिंग बटन स्क्रोल करके देखिए तो नंबर आपका चेंज होते जाएगा. जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो स्क्रोलिंग बटन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, स्क्रोल डायल जो सामने की तरफ है कैमरा के, ये वाला. हाँ, सामने की तरफ का जो रेड कलर है ना जिसके नीचे ये वाला जहाँ पर एरो दिखाई दिया है ना, हाँ, वो आप स्क्रॉल कीजिए. तो जब स्क्रॉल कर रहे हो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. एक मिनट. और कोई सेटिंग प्रॉब्लम है? ओके, आपने कैमरा एम पे डाला है, अभी एम मोड पे डाला है, राइट? इधर ए बटन में. ओके, ये एम में एम तरफ डाला, एम पर डाला, मतलब अभी आपका जो कैमरा है वो मैनुअल मोड में है. मैनुअल मोड, राइट? अभी मैनुअल मोड में आपने रखा है तो वहाँ पे आपको शो करना चाहिए शटर स्पीड जैसे आप स्क्रॉल करते हो. अगर वो शो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कैमरा जो उसको एस मोड पे डालिए. एस मोड. ओके, डाला. राइट? अभी आपको एलसीडी पे कुछ नंबर वगैरह दिखाई दे रहे हैं? कुछ नहीं दिखता है. एलसीडी पूरा ऑफ है सर आपका अभी? कुछ नहीं. ओके, ऑफ नहीं है. हाँ, अभी if I rotate this, nothing is happening. nothing is Shutter happening. speed.
ओके कोई Means बात नहीं. something else is stopping it. ओके ओके मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, तो वीडियो में आपको एक आइडिया आ जाएगा. ये मेरा कैमरा है D90. ओके, अभी इस D90 में हम देखेंगे कि शटर किस तरीके से वर्क करता है. अभी आपकी स्क्रीन है, राइट. तो ये जो कॉर्नर में आपका M आपको दिखाई दे रहा है, उसके सामने कुछ नंबर लिखा होगा एलसीडी पे. ये जो स्क्रीन है ना, देखिए M है, M के बाजू में कुछ नंबर होगा या फिर S दिखाई देगा और S के बाजू में कुछ नंबर होगा. Okay, 0, 0, 1, 2 मतलब 0 नहीं होगा. 16, 32, 100, 1/25 ऐसा कुछ नंबर. मुझे कैमरा शो कर सकते हो? कैमरा के एकदम क्लोज जो आपका वेबकैम है, वेबकैम के नहीं एलसीडी दिखाइए सर. एलसीडी ये वाला. हाँ, बैक साइड वाला, जहाँ पर आप सारी डिटेल्स चेक कर पा रहे हो ना. हाँ, तो उसमें कोई नंबर आपको शो कर रहा है? 20. मतलब आपका शटर स्पीड कितना है? 1/20. अभी वो जो स्क्रॉल है उसको स्क्रॉल घुमाइए आगे, एंड क्लॉकवाइज जो स्क्रॉल है उसको क्लॉकवाइज स्क्रॉल कीजिए, वो नंबर इंक्रीज होते जाएगा. जो स्क्रॉल बटन है ना, स्क्रॉल बटन आप जैसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो आपका जो नंबर है वो नंबर इंक्रीज होगा. F7.1, F is changing. F is changing. ओके. F is changing मतलब अभी आपका अपर्चर चेंज हो रहा है जब आप स्क्रॉल कर रहे हो. तो अभी आप कैमरा को M मोड पे आपने किया है कि S मोड पे किया है? ये अभी चेंज हो रहा है. 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 600, 2000, 2500, 4000. राइट. तो अभी आपका शटर जो है कैमरा का वो है 4000 तक. ओके, राइट. तो एंट्री लेवल कैमरा हम लोगों ने सीखा जहाँ पर शटर स्पीड मैक्सिमम 4000 तक हमें अलाउ करता है. हाँ, लेकिन अगर मेरा ना जब कई में शटर वगैरह मेरा लेंस भी चेंज करता हूँ तो उसके हिसाब से भी मेरा शटर चेंज होता है. तो मैक्सिमम शटर स्पीड हो सकती है 1/8000 तक. ओके. अभी आप उसको कम कीजिए, जो जिस डायरेक्शन में आप जो स्क्रॉल कर रहे थे ना, 100 की डायरेक्शन 100 तो 100. हाँ, तो 100 से और कम कीजिए, जो आपका आएगा 100 से 20, बाद में 1, 2 माइनस में जाएगा. 8, 6, 4, 3, 2, 1.6, 1.3, 1 by एकदम माइनस कम कर दीजिए. माइनस तो नहीं दिखा रहा है. नहीं माइनस नहीं शो करेगा सर. आपका जो स्क्रॉल डायल है ना, वो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कीजिए, तो आपको मिनिमम कितना है वो अभी हमें पता चलेगा. 2.5 मतलब आपका जो शटर है वो 2.5 सेकंड तक ओपन रहता है. ठीक है. अभी ये वीडियो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमें एक आइडिया आ जाएगा. ओके, सो जब अभी आप देख पा रहे थे वहां पे मिनिमम शो कितना कर रहा था सर नंबर? यहाँ पर 2.5 सेकंड. 2.5 So seconds. get this, every 1.07 seconds, a new user goes to Wix.com and starts showing up speed and राइट. सो ये आपका कैनन, ये आपका जो एलसीडी स्क्रीन है वो निकॉन का एलसीडी स्क्रीन है. तो जहां पर अभी ये देख पा रहे हो नंबर जो है, राइट, तो ये आपका जो नंबर शो कर रहा है, आप इमेज में जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर कॉर्नर में आपका एस मोड शो करेगा, यहाँ पर आपका नंबर है. तो अभी जो नंबर आपके कैमरा में है ना, अभी जो शो कर रहा है वो आपका शटर स्पीड है. मतलब जैसे अभी आप 1/250 2.5 जो बता रहे हो ना, तो क्या रहेगा 2.5 सेकेंड आपका शटर स्पीड होगा. तो 2-2.5 सेकंड के लिए आपका शटर ओपन रहेगा, लाइट एंटर करेगा, इमेज क्लिक होगा, उसके बाद में आपका शटर क्लोज हो जाएगा. अभी आप एक काम कीजिए, कैमरा जो है, कैमरा को जो क्लिक करते वक्त जब आप बटन प्रेस करते हो ना, तो वो बटन प्रेस कीजिए, एक इमेज क्लिक कीजिए. अभी आपका जो कैमरा आपने रखा है 2.5 शटर स्पीड पे, राइट. हाँ,
अभी आपका जो लेंस पे मैंने बोला था ऑटो फोकस वाला बटन, वो ऑन कीजिए, ए पर कीजिए। 2.5 में रखा। हाँ, और आपका जो लेंस में जो बटन था ना ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का, वो बटन हाँ, आप ऑटो ए पे रखिए, मतलब ऑटो फोकस पे रखिए। ऑटो में रखिया। हाँ, ऑटो में रख रखा। दिया। अभी एक फोटो क्लिक कीजिए, हाथ से फोटो एक क्लिक कीजिए। हाँ, ठीक है, तो जो शटर अभी ओपन हुआ, वो शटर 2.5 सेकंड के लिए ओपन हुआ, राइट। तो अभी आपको मैंने जो बताया था प्रीव्यू बटन है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, प्रीव्यू का एक बटन है, वो प्रीव्यू का बटन हाँ, प्रेस है। कीजिए। तो जो किया। इमेज, राइट, जो फोटो क्लिक हुआ है थोड़ा सा शेकी दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा ब्लर हाँ, टाइप दिखाई देगा, राइट। ब्लर ब्लर। हाँ, अभी सेम कैमरा टेबल पर रखिए, कैमरा जो है टेबल पर रखिए ताकि कैमरा शेक नहीं होगा, और सेम एक इमेज क्लिक कीजिए। हाथ मत हिलाइएगा ज्यादा, कैमरा को चेक नहीं करना है हमें, सिर्फ उस बटन को प्रेस कीजिए, कैमरा हिलना नहीं चाहिए। कैमरा टैब टेबल पर रख दीजिए। ठीक, इमेज क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी प्रीव्यू का बटन प्रेस कीजिए और वो इमेज देखिए। ये भी ब्लर है। ब्लर, ये भी ब्लर आया आपका। ओके, तो थोड़ा ब्लर है वो। 1 मिनट। हाँ हाँ, इमेज ब्लर हो रहा है। ब्लर है। तो इसमें सर बॉडी में देखिए, मैंने जो आपको पहले बटन बताया था, बॉडी में भी हमारे एक बटन है कैमरा के बॉडी के नीचे, ए और एफ का, जहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड का बटन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आपका, जब वो भी ए पे या एम पे है उसमें कैमरा का, जो कैमरा का बॉडी है ना अपना, तो शटर रिलीज का जो बटन है कैमरा में, शटर रिलीज का, सॉरी, लेंस रिलीज का जो बटन है, लेंस रिलीज का, उसके नीचे और एक बटन था आपके कैमरा में, ओके, बताया था। मैं आपको वो एक इमेज बताता हूँ। ओके, हाँ, ये देखिए, ये एक बटन जो था, ये बटन कहाँ पर शो कर रहा है, मतलब एम पे है या ए पे है। ये जो आपका कैमरा है, कैमरे में आपका ये लेंस रिलीज का बटन हुआ, उसके नीचे और एक बटन था, वो ए पर है या एम पर है? यहाँ पे ये पर है। ए पर है। तो अभी आपका लेंस भी ए पर है, आपका कैमरा बॉडी भी ए पर है, बराबर, राइट। ओके, और जब आप क्लिक करोगे तो पहले बटन हाफ प्रेस कीजिए। हाफ प्रेस करोगे तो कैमरा के अंदर बीप का साउंड सुनाई देगा, मतलब कैमरा फोकस करेगा। हाफ प्रेस कीजिए, बीप का साउंड सुनाई दिया, उसके बाद फुल प्रेस कीजिए, राइट। तो जब अभी आया, बराबर, मतलब क्या हुआ कि कैमरा जो है, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं आपने डायरेक्ट जब क्लिक किया ना इमेज, तो कैमरा को टाइम नहीं मिला फोकस के लिए। तो कभी भी हम जब इमेज क्लिक कर रहे हैं तो पहले हाफ प्रेस करेंगे। हाफ प्रेस जब करेंगे तो कैमरा ऑटोमेटिकली फोकस करेगा कौन सी चीज उसके सामने है, कौन सी दूर है। तो आपको बीप का साउंड सुनाई दिया, उसके बाद फुल प्रेस कीजिए तो इमेज आपका क्लियर आएगा। अभी जो इमेज आप हाथ से क्लिक कर रहे हो ना, उसको आप जब जूम करोगे तो थोड़ा सा ब्लर होगा। सेम आप टेबल पर रखिए, टेबल पर रख के आप हाफ प्रेस कीजिए और उसको फुल प्रेस कर दीजिएगा, तो वो जो इमेज क्लिक होगा वो प्रॉपर शार्प इमेज होगा। ये टेबल के ऊपर रखने से क्लिक होगा, देख लीजिए, या फिर हमें कोई अभी ट्राइपॉड तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है ना, तो हम लोग स्टेबल सरफेस ले रहे हैं। कोई भी इमेज हमें क्लिक करनी है, सिर्फ इतना हमें ध्यान में रखना है कि जब मैं शटर स्पीड स्लो रख रहा हूँ तो मुझे मेरा कैमरा शेक नहीं होना चाहिए। तो अभी आपका एक प्रैक्टिस हो रहा है कि जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि अभी आपका ना, अंडरस्टूड फिलॉसफी, आई अंडरस्टूड, राइट, समझ में आया आप, राइट सर, ओके। ओके, दिस हाफ क्लिकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हेन यू आर, तभी फोकस होगा। एग्जैक्टली, जब मैं हाफ प्रेस करता हूँ ना, तो कैमरा क्या करता है, कैमरा पूरी स्क्रीन को एनालाइज करेगा, और जो स्क्रीन में उसको सब्जेक्ट शो कर रहा है, जैसे अभी मेरा ये हाथ क्लोजर है, तो कैमरा ऑटोमेटिक इसके ऊपर फोकस कर देगा। so that mechanism entirely built up in the camera, which will make us to understand that when the focus is getting click or focus is not getting click.
If I press straight away very fast, then image is getting blurred. Blur, because the time is not getting for camera to focus. That's the reason Yes. the image If is I getting blurred. slowly press it, Hmm. see this image Okay, with half pressing and full pressing, right. it is clear. Definitely. Whereas next image, full press straight away, Right. blur. So the blur factor is there. So that we will understand only when we will practice. Yes, yes. Right. Okay, sir. So now, as of now, what we have studied about the shutter speed, it is the one major pillar of the photography. Then the functioning of that shutter speed. Then the use of shutter speed. Now again the parameter like a chart, that what is the measurement to capture or to know the shutter speed. Which is whenever it has to be slow, it has to be fast. Like here we understood like slower shutter speed is there. So now here we can see two different images are there, and if my shutter speed is 1/250, so I am able to capture this entire jump of that particular swimmer. So in the image I am getting like the swimmer is like sleeping in the middle of that swimming pool. In the image if it is getting like this, but it is just because I am capturing with the faster shutter speed. Same here, there is a dancer who is dancing, but due to the slow shutter speed, I'm able to capture her motion. That moments of her hands are getting captured, and that entirely blur image is getting captured. So this kind of creative images we can use or we can create using the shutter speed. Like here, which is called as a panning shot. The panning shot means what? When I'm capturing a car or any moment of vehicle, so that time what I will do, like my camera is this kind of way, okay, so I will keep my shutter speed high, but as per the direction of that subject I will move around. So like this camera, I put that camera in my hand and I'm like switching my direction towards the subject. So what will happen here? So here I'm making pull to the camera, like the auto rickshaw is the same, which is not moving, and that particular buildings are getting moved. So like camera is understanding, and because of that this image has been taken. So say suppose if I capture with the highest shutter speed, so ideally how it should be like, अगर वो ऑटो रिक्शा स्पीड से जा रहा है तो ऑटो रिक्शा ब्लर होना चाहिए था, और वो जो आपकी बिल्डिंग है जो स्टेबल है वो करेक्ट दिखाई देनी चाहिए थी. लेकिन यहाँ पर ड्यू टू दिस पैनिंग शॉट, जहाँ पे मेरा कैमरा भी खुद मूव कर रहा हूँ, तो कैमरा को ये लगता है कि जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मूव कर रही है और रिक्शा वही का वही खड़ा है. तो दैट्स द रीजन माय कैमरा इज एबल टू फोकस with the auto rickshaw, and that entire building is getting blurred, entire road is getting blurred. So this kind of shots I'm able to see when I'm using my shutter speed. Plus I'm using that alag technique like panning technique of camera when I'm moving with my camera. Auto is moving in this direction, but camera you are moving in this direction. Exactly. So like in sport photography, ideally it should be in sport photography मुझे ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज मुझे बाकी सारी चीजें ब्लर चाहिए, लेकिन जो मोटर बाइक का अगर रेसिंग है तो मुझे मोटर बाइक हमेशा फास्ट में मोटर बाइक को ही कैप्चर करना है. तो जो स्पोर्ट फोटोग्राफर से वो हमेशा उनका कैमरा मूव ऑन करते हुए आपको दिखाई देंगे. कभी भी अगर मैं रेसिंग का कोई शॉट ले रहा हूँ या फिर कुछ भी शॉट ले रहा हूँ मैं जहाँ पे मोमेंट ज्यादा हो रहा है, तो मैं फटाफट इमेजेस क्लिक कर रहा हूँ, प्लस साइमल्टेनियसली उसी स्पीड में मैं मेरा कैमरा भी मूव करूंगा ताकि मेरा कैमरा जो है उसको प्रॉपर फोकस लॉक करके इमेज क्लिक कर सके. अभी ये जो जूम इन और जूम आउट शॉट है, ये क्या होता है कि जैसे ये एक पेंटिंग है तो पेंटिंग स्टेबल है. अभी मैंने क्या किया, मैंने शटर स्पीड मेरा स्लो रखा, प्लस जब मैं शॉट ले रहा हूँ तो मैं जूम रिंग को घुमा रहा हूँ, तो मैं कैमरा जूम कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ. पहले चीज में मेरा कैमरा मूवमेंट कर रहा था, अभी कैमरा स्टिल है, मैं लेंस मूवमेंट कर रहा हूँ, तो लेंस मेरा जूम कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ. तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो दिस काइंड ऑफ इमेज आई विल गेट इन अ रिजल्ट. तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर पार्ट जो है वो सेम रहेगा, बाकी की सारी चीजें ऐसे स्प्रेड जैसे दिखाई देगी. सो आई विल शो यू अनदर शॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर, लाइक हियर वी कैन सी. तो यहाँ पे ही है या बिकॉज बहुत सारे इमेजेस मैंने ऑलरेडी ना अपलोड कर चुका था यूट्यूब पे, अपना ये फेसबुक पे बहुत पहले से.
तो उसमें वो और एक शॉट है जब आई वॉज स्टडिंग, तो दैट टाइम आई क्लिक द शॉट, और उसको बहुत सालों बाद में मुझे जब वो इमेजेस मिले, so I put that on, upload it on Facebook, so I will able to see that panning shot and again a zoom in zoom out shot. So this is again one example of slower shutter speed. अभी ये मैंने रात को कुछ 11:30-12 बजे के आसपास क्लिक किया है, जहाँ पर मेरा कैमरा मैंने एक पत्रे के ऊपर रखा था, and I slow down my shutter speed to 1/20th of the second. So what happened? That light got hit for 1/20th of the second, and then I will be able to capture this entire buildings and the light and all. So this is the raw image which is not has been edited. जैसे क्लिक किया है वैसे उसको प्रेस किया है, सॉरी अपलोड किया है. अगेन दिस इज अ स्लोअर शटर स्पीड इमेज. सो नाइट में जब मैं कोई शूट वगैरह करता हूँ तो मुझे वो लाइट जो है उस लाइट को कैप्चर करना है. सो ऑलवेज आई ट्राई कि मुझे जो है शटर स्पीड फास्ट में रखना है. जैसे यहाँ पर द ट्रेन इज रनिंग अवे, ओके, ट्रेन इज इन द स्पीड एंड आई एम कैप्चरिंग दैट इमेज. सो मेरी जो इमेज में आप देख सकते हो कि मेरी ट्रेन जो है वो कैप्चर हो रही है, and it was the story behind that particular image ki first class attitude in Thane station. So here the beggar is sleeping, again the dog is sleeping, and जहाँ पे वो ट्रेन है तो फर्स्ट क्लास का डब्बा है. सो लाइक मैं कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहता था मेरी स्टोरी के जरिए, मेरी इमेज में, कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है. दो जो हम लोग रिच दिखाई देते हैं जो एक्चुअल में है, लेकिन अगर मैं दिल से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सो आई एम लाइक अ बेगर. सो मेरा दिल से भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, प्लस आई शुड बी हैव पर्टिकुलर, वो एक बोलते हैं ना कि समाज में जैसे फर्स्ट क्लास मतलब बहुत ज्यादा बोला जाता है, दैट कॉन्ट्राडिक्शन आई वाज सपोज्ड टू से, सो दैट आई कैन एबल टू टेल ओनली विद द इमेजेस. तो वो जरूरी है कि जो भी आप इमेज क्लिक करोगे तो इमेज में आपकी स्टोरी पता होनी चाहिए, स्टोरी में जो कन्वे कर रहा हूँ, व्हाट मैसेज आई एम एबल टू कन्वे. लाइक सेम शॉट. यू टेक मी बैक टू दैट नाइट. ये राइट, ये भी चलेगा, कुछ भी चलेगा नाइट का. हाँ अभी देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा फिजिक्स बताऊंगा. जी जी. ये क्या है, आपका शटर स्पीड ज्यादा है, मींस यू आर ओवर एक्सपोजिंग. देन व्हाट हैपेंस इज फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट द लाइट विल कम वेरी फास्ट टू द कैमरा, whereas from farther side it takes some time to come. When you expose it more, even the farther light will fall on the camera. When you increase the shutter speed, shutter is opened for a very fraction of a second, then only the front light will come, back light won't come. That is why you will see the backdrop not coming. Right. That is the physics. And the light speed is 3 lakhs kilometer per second. Yeah, ठीक है, फिर भी आपका shutter speed भी ऐसे है ना. Exactly. That is why that is what I understood. Right, sir. Because the amount of light fall, from the nearest object it will come faster. Whereas from farthest thing, it is not coming. Exactly. When you close the shutter very fast, the farthest one is not seen at all. Exactly. तो मैं जब उसको ज्यादा टाइम तक ओपन रखूंगा तो एक्सपोज करेगा, वो भी आ जाएगा. जैसे अभी सेम इमेज मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ मॉर्निंग का टाइम इमेज लिया है, लेकिन ये प्लेन है. तो जो प्लेन कंटिन्यू जो मूवमेंट हुआ उसका, तो प्लेन का जो ये टेल लाइट था जो प्लेन के नीचे होता है, वो लाइट का पूरा एक लाइन फॉर्म हुआ. तो जहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जहाँ पर मैंने कैमरा ने मेरे प्लेन को कैप्चर किया. तो वो प्लेन कंटिन्यूअस स्पीड में जा रहा था, मेरा जो शटर स्पीड है उसके अकॉर्डिंग वो कैप्चर हुआ, और इट इज गेटिंग फ्रेम लाइक अ वन लाइन. तो कोई भी चीज अगर मूवमेंट हो रही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक रोड है, तो रोड पे गाड़ियां कंटिन्यूअसली आ रही थी, वो लाइन जैसे आ गया. whereas the buildings and that trees are getting stable, तो वो वैसे के वैसे क्लिक हुए. So again, but those are all moving object. This is stationary. Right. So again, I have to keep in a mind कि मैं अगर नाइट में शूट कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट मेरे स्टिल है वो, और मेरे सब्जेक्ट मेरे मूव ऑन कर रहे हैं, जो लाइट मूव ऑन कर रहे हैं वो एक लाइट फॉर्म करेंगे. जैसे इस इमेज में मेरी बोट की स्पीड ज्यादा है, लेकिन मेरा कैमरा स्पीड ज्यादा होने की वजह से, शटर स्पीड ज्यादा होने की वजह से मैं बोट को डायरेक्टली कैप्चर कर सका. मैंने बाद में ये जो वेव्स वगैरह है, ये वेव्स भी मैं कैप्चर कर सक रहा हूँ. लाइक हियर मैंने शटर स्पीड ज्यादा रखा है, तो मैं
जो मुंबई है, मुंबई को भी कैप्चर कर पा रहा हूँ, प्लस मेरे जो ये वेव्स होते हैं समुद्र में वो मुझे कैप्चर कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मुझे यहाँ पे मिल्की इफेक्ट चाहिए होता तो मैं क्या करता, मैं शटर स्पीड स्लो कर देता तो मुझे मिल्की टाइप इफेक्ट पता चलता ऐसा। तो ये एक हम लोगों ने एग्जांपल देखा। दीज आर अगेन ये वाइल्ड लाइफ वगैरह। तो जब मैं वाइल्ड लाइफ में ज्यादा शूट कर रहा हूँ तो मुझे शटर स्पीड ज्यादा रखनी पड़ती है, बिकॉज जो सब्जेक्ट्स है बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं। लाइक ये जो शॉट है मैं आपको बोल रहा था जूम इन जूम आउट शॉट, तो सेम मैंने एक शिव जी का पेंटिंग था उस पर मैंने कैमरा फोकस किया। मैं जब क्लिक कर रहा हूँ शटर स्पीड स्लो रखा 1/20, 1/15, और मैंने रिंग जो है उसको जूम किया। तो जब मैं रिंग जूम कर रहा हूँ, रिंग जूम आउट कर रहा हूँ, वो भी मुझे फास्टली करना है तो मुझे इस काइंड ऑफ शॉट मिलेगा। सेम अगर मैं जैसे ऑटो रिक्शा का मैंने आपको इमेज बताया, तो यहाँ पर मैंने बाइक के ऊपर फोकस किया, मैंने कैमरा पैन किया तो ऑटोमेटिकली मेरा फोकस बाइक के ऊपर लॉक हो गया एंड आई एम एबल टू सी लाइक बाइक इज इन द फोकस and entire the elements of the frame are getting blur. So that is just because our techniques of the shutter speed. Okay, so that we understood in today's lecture that exactly what shutter speed is there. Now we will see one ideal chart of the shutter speed, like the situations. Say suppose I am shooting particular situation, so ideally how much what should be the speed? Exactly, sir. How much shutter speed should be there? Now, this is a ideal chart of the shutter speed. Like, say suppose if I am capturing a still life, अगर मैं still life capture कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा जो ना सब्जेक्ट है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो मेरा शटर स्पीड स्लो होने दीजिए या फिर ज्यादा होने दीजिए, कोई मैटर करेगा नहीं। इफ आई कैप्चरिंग अ बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग तो मूवमेंट करेगा नहीं। तो मुझे अगर बिल्डिंग को कैप्चर करना है इन अ स्टिल लाइफ, my shutter speed will not affect that much as a subject because subject is completely static. If I am shooting a landscape, like landscape are purely static, but the wind, that wind will move, then clouds also will get moved, the grass, the leaves, they are always moving in the landscape. अगर मैं कोई landscape में क्लिक कर रहा हूँ तो जो पत्ते वगैरह होंगे झाड़ों के वो थोड़े पर हिलेंगे, हवा वगैरह चलती रहती है। So in that case what happens, मेरा जो शटर स्पीड है वो मुझे 1/30th of the second अगर मुझे क्लिक करना है, अगर स्टिल इमेज क्लिक करना है तो 1/30th of the second। अगर उससे भी मुझे मिल्की टाइप इफेक्ट चाहिए जहाँ पे मुझे क्लाउड्स जो है क्लाउड्स का एक पूरा लाइन जैसा दिखाई देना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरा शटर स्पीड और कम कर दूंगा, लेकिन उसमें मुझे क्या एक अलग टाइप का इफेक्ट मिलेगा, लाइक अ मिल्की टाइप ऑफ इफेक्ट, तो वो एक हो जाएगा। अगेन नाउ थर्ड आइडियल सिचुएशन इज लाइक स्ट्रीट सीन। अभी स्ट्रीट सीन में क्या होता है कि जैसे मैं बाहर मार्केट में गया, वहाँ पे मुझे स्ट्रीट लाइफ शूट करनी है। अभी वहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, कुछ चीजें स्टेबल होती है, कुछ लोग चल रहे हैं, कहाँ पे गाड़ी वगैरह आ रही है। सो बोथ द combination I am getting in my particular frame. So in that case, if I am using my camera as a handheld, so my shutter speed will be 1/60th or 1/125. It can be higher, but it cannot be a less. अगर मैं दिन में शूट कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस से बहुत ज्यादा लाइट होगा, तो मैं 1/125 से 1/250 तक भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कम जाऊंगा तो मुझे ट्राइपॉड लगेगा या फिर मुझे स्टेबल सरफेस लगेगा। अगर वो नहीं है तो जैसे हमने प्रैक्टिस किया तो मेरा जो इमेज वो ब्लर हो जाएगा। सो द आइडियल रेंज इज 1/60th or 1/125. We can switch it out. Then comes to your holiday photos. Now in holiday photos, your ideal is like the same as the street scene, because holidays में भी हम लोग बहुत सारे moments वगैरह करते रहते हैं। So it will be like 1/60th or 1/125, right? So then it comes to your person walking. So now अभी जब जहाँ पर इंसान वगैरह चल रहा है तो वो स्पीड जो है वो कम है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं नॉर्मल वॉकिंग कर रहा हूँ तो मेरा स्पीड कितना रहेगा, 1 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स पर आवर, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो शटर स्पीड है वो मुझे 1/125 से लेकर 1/250 तक रख सकता हूँ मैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द सब्जेक्ट। मैं कितने फास्ट चल रहा हूँ, अगर मैं स्लो चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, फास्ट चल रहा हूँ तो मुझे और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। सेम इन पर्सन रनिंग। अभी जब पर्सन रन कर रहे, जैसे मैं मैराथन शूट कर रहा हूँ, किसी एथलीट का मैं रनिंग जो उसका एक कॉम्पिटिशन है उसको शूट कर रहा हूँ, तो उनमें उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें जब मैं
मेरा शटर स्पीड जो होगा वो 1/500 से लेकर 1/1000 तक भी जा सकता है. 1000. Right. If I'm shooting up athletes, if I'm shooting a marathon where the person is running in too fast, then comes to your American football, soccer, rugby, these kind of games like sports game. Here again we have to keep a shutter speed is minimum is the 1/250 and the maximum is 1/1000 of the second. But again we should have a lots of practice. Why should we should have a lots of practice? Because that focus we should be able to capture on the particular subject. अगर मैं कोई क्रिकेट मैच कैप्चर कर रहा हूँ या फिर फुटबॉल मैच कैप्चर कर रहा हूँ, मैंने इमेज तो मैं ले लूंगा, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिस नहीं होगा तो मेरा फोकस जो है तो फोकस मेरा हट जाएगा, तो मेरा जो एक्चुअल इमेज है वो इमेज तो मेरा ब्लर हो जाएगा. So that's the reason when I'm capturing a sport photography, I will require a lot of practice. Then your car, which is having approximately speed of 30. And also tripod Yes, for sports. yes, definitely. In sport, we will require a tripod because without tripod, we cannot shoot. वहाँ पे बहुत ज़्यादा fast होता है, तो they always carry a heavy tripod with them, depending upon the weight of their camera. But And if your shutter speed is very high, then vibration will come. No. If shutter speed is high, then the vibration will not come because मेरा बहुत fast image click कर रहा है, तो मैं shutter speed जब कम कर रहा हूँ तो मुझे ट्राइपॉड की जरूरत लगेगी. हाई है तो ट्राइपॉड की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मेरा कैमरा वेट है कैमरा का, बिकॉज द हाई रेजोल्यूशन हैविंग वेट 2 kg 2.5 kg, तो हर बार तो मैं हुई भी You can't hold it. राइट. सो दैट्स द रीजन आई रिक्वायर अ ट्राइपॉड बिकॉज आई एम शूटिंग फॉर लॉन्गर टाइम. पूरे मैच तो मुझे पूरे मैच तक रुकना है वहाँ पे, राइट. So now it comes to your car, which is having approximately speed of 30 miles per second. Then again your shutter speed maximum range is 1/2000th of the second, minimum is 1/1000th of the second. Then comes to your motocross. So now in a motocross we should have approximately 1/500 of the second, but again over a lot of practice because we will be able to capture the image, but the focus will get varied if I don't have a practice. Then lastly comes to your F1 and any Indy car. So in that case, my speed is too much high, and that I have to capture. So it can be started from 1/1000th of the second. It can go up to 1,800. Sorry, 1/8,000. तो वो हाँ डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा जो सब्जेक्ट है कितना फास्टली जा रहा है. तो अभी मैं F1 का कार रेसिंग देखता हूँ या फिर कोई स्पोर्ट कार की जब मैं शूट कर रहा हूँ, तो वट ऑब्वियसली मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट कार में, तो उस वक्त मुझे ध्यान में रखना है कि मेरा शटर स्पीड भी ज़्यादा होना चाहिए, प्लस मेरा फोकस भी मुझे प्रॉपर चाहिए. दैट्स द रीजन आई रिक्वायर द हाई एंड रेजोल्यूशन कैमरास इन विच दे विल अलाउ मी टू कीप माई शटर स्पीड एट 1/8000 एंड अगेन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू फोकसिंग एंड ऑल. सो दैट एंटायर थिंग, दो मैकेनिज्म जो है मेरे दिमाग में मुझे फिट होना चाहिए कि अगर 1 सेकंड भी मेरा इधर उधर हुआ तो मेरा सब्जेक्ट चला जाएगा. सो आई शुड हैव, मुझे मेरे पास सिर्फ 1 नैनो सेकंड है, उसमें मेरी स्पीड वाली कार जाने वाली है, तो उस टाइम में मुझे इमेज क्लिक करना है, तो दैट इज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो ये हमने एक चार्ट देखा शटर स्पीड का. नाउ दिस इज अगेन वन आइडियल मैकेनिज्म कि अगर मेरा फोकल लेंथ, जैसे अभी आपका जो लेंस आपके पास है उसका फोकल लेंथ है 55 से लेकर 250 तक, सॉरी 55 से लेकर 200 तक. तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास दूसरा लेंस है जिसका 24 mm उसका फोकल लेंथ है, तो मुझे आइडियल मेरा जो शटर स्पीड है उस फोकल लेंथ को कितना होगा 1/30th. मैं 28 mm पे अगर शूट कर रहा हूँ तो सेम 1/30th. 50 mm पे अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो मेरा डिस्टेंस मेरे सब्जेक्ट से रहेगा 1 से 2.5 फीट के आसपास. तो मुझे जो शटर स्पीड यूज करनी है 1/60th के आसपास, ठीक है, हैंड हेल्ड में 70 mm पे शूट कर रहा हूँ, तो again distance come to 2.5 feet and all 2.5 feet. So again my shutter speed can be 1/60th. If I'm shooting on a 90 mm, it can go up to a 1/125 of the second. When I'm shooting on a 135 mm, then 200 mm, 300 mm, 500 mm. So 500 is particularly suitable for wildlife photographers. They require a high range of zoom. So the 500 mm is means like 50 meters or 100 meters, the subject is far away from me. So in that case, I will be required the focal length, but again my shutter speed will be too much high because I'm capturing the subject which is a moving subject. तो मैं shutter speed उसमें ज़्यादा रखूँगा. अभी this chart is ideally, but it can
change every time because मुझे जब मेरा कोई शूट करना है तो totally entire setting is mine. तो मुझे देखना है कि मेरी situation क्या है, what I am shooting, which camera I have, which lens I have, and according to that I have to manipulate with the settings, right? So in today's lecture we'll learn that what is the shutter speed, how it is getting measured, what is the function of the shutter speed, then which are the different examples of the shutter speed, like slow shutter speed if I am using, then how the result will come, faster shutter speed when it is getting used, then ideal situations, like if I am shooting this kind of situation, so what should be the ideal particular shutter, ideal range for that shutter, like in events we require a lot of shutter speed, that is high shutter speed, because in events the subjects is getting moved too far, like in pub or disco bar. So that time I have to keep shutter speed too much fast, but again I have to capture the light. So what I will do, I will shutter speed increase, I will increase the shutter speed, but simultaneously I will compensate my setting with my aperture or my ISO. That will be the balance image. So these are the three pillars. So as of now we learn two pillars. One is our aperture, second which is our shutter speed. Okay, so tomorrow we will be having our third pillar, which is called as a aperture, shutter speed and ISO. So we will learn that what is the ISO, how we are using that ISO, how it is getting measured, and which are the ideal situations where I have to keep my ISO on minimum level or a maximum level. So these are three things, and once these three things we learn, then our next chapter will be exposure triangle, which is called as a balancing of these three particular pillars. So we will be learning that how we can balance three particular pillars to get a balanced image, means a perfect image. Okay? So now today, as of now, what we have understood, do you have any doubts, sir, that अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वगैरह? Okay? No, it is good today. It was good. Sure, sir. So आज का जो लेक्चर है हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे. शटर स्पीड का आज आपका असाइनमेंट क्या है कि आपको एक तो कोई सब्जेक्ट रखिए, आपका जो कैमरा है, कैमरा के सामने कोई सब्जेक्ट रखिए 2 या 2.5 फीट के दूरी पे, कैमरा अपने टेबल पे रख दिया. अभी जो आपका कैमरा है वो आपको एस मोड पे डालना है. ओके, एस मोड पे डाला आपने. अब आप क्या करोगे कि जो मिनिमम लेवल है, मतलब जो आप मुझे बोले थे 2.5, तो 2.5 पे एक क्लिक कीजिए. 2.5 के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉप आपके कैमरा में शो कर रहा है, जैसे 2 सेकंड शो कर रहा है, 2 सेकंड में एक इमेज क्लिक कीजिए. 2/3 सेकंड में कीजिए, 0 पे कीजिए, 1/1 पे कीजिए, 1/100 पे कीजिए, 1/125. जितने पॉइंट्स है उतने इमेजेस आपके होंगे. तो वो जो सीरीज होगी, सीरीज में हमें पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्टली रिजल्ट कैसे मिल रहा है. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. देयर इज अनदर स्टूडेंट to whom I gave a assignment. Okay, yeah. So I told her to capture all the shots using different shutter speed. Like here, she has used the shutter speed 16 using her mobile phone in the night. This is shutter speed as 2 seconds, then 4 seconds, then 8 seconds, then shutter speed as again 2 seconds. In ISO is different. So I gave her two ideal situations where she has to practice, and in the next lecture we will discuss that what is the difference and why this difference we got in our images. Okay. So ये हमारा यहाँ पर आज का जो लेक्चर हम लोग एंड करते हैं.